meager and selfish reason of some politicians, it has been extended persistently. This is just sick politics. People say that democracy has retarded the scientific and the material growth of the nation. I would like them to take a look at ISRO and DRDO or any other government organization that have made such achievements that have not been able achieved by some any other countries in the world. We people are here to discuss, to speak what we feel, to point out the pros and the cons. Just remember, you're getting this opportunity because you live in a democratic country like India. Thank you. Thank you. Now, we would like to call Ellen. Thank you, Selena. So, one thing, Selena, sorry to intervene. So, the questions would be discussed in the end or after the speaker is over? Ma'am, the interjection will be after. After everybody has spoken. No, ma'am, not everyone. We have we have two people, and then after one is for one is for the motion, other one is against the motion, and after both of them has spoken their debate, we will have an interjection section for 1 minute. Fine, perfect. Thank you. Yes. Only judges will ask, not the participants or any other one. Okay, ma'am. Thank you. Okay, I'm starting. Greetings, respected judges, teachers, fellow participants, and my dear friends. My name is Alan Matthews, and I'm here speaking against the motion. That is, I'm going to bring out the challenges of our democracy. First of all, a very happy Republic Day to everyone. Republic Day, a day when our constitution was established and enacted, and democracy came into being. So, such a day is meant to be appreciated and applauded for, right? And here I am challenging this very democracy. How ironic. But, guys, listen, before you go ahead and start judging me, hear me out, okay? I am proud of our democracy, which is one of the finest, I must say, but it does have its inconsistencies and inadequacies, and we cannot turn a blind eye to that, can we? I feel that this day is not just confined to listing out all the achievements, but also to look back at our shortcomings. What went wrong? What were the downsides? And how we can work on that and make things better. Because unless we acknowledge the mistakes, how can we correct them, right? We are proud to be the largest democracy in the world, and rightly so. Because for more than 60, 70 years, we have witnessed successful elections, people exercising freedom of expression, freedom of choice, movement, religion, everything. Surely we are the best. But being the best does not mean we do not have any failures, or as I would like to call them, challenges. Democracy does not just mean carrying out free and fair elections, though it is a part of it, but in its core essence, it is also means fulfilling the social and economic aspirations of the people. And how far have we been successful in doing that? Because despite all the good things, we often listen to complaints about prevalent inequalities, injustice, non-fulfillment of expectation. I'll just list out one or two of them because of the time constraints, and I'm sure the rest of the debaters would point it out. I'd like to start with poverty or hunger. It is generally said that for a hungry person, the right to vote does not have any meaning. For him, the first requirement is food. You would be surprised to know that even now, a considerable proportion of Indian population lives below poverty line, or called BPL. Therefore, poverty is considered as the greatest pain of democracy. Moving forward, I would like to point out gender discrimination. Discrimination against girls and women exists in every walk of life. You may ask, how is this a challenge to democracy? Let me answer that question for you. This is because gender equality is one of the basic principles of democracy. As per the Constitution of India, every person, irrespective of his gender, has equal rights and are to be treated as equals. But unfortunately, the discrimination against females continues to be a fact of life. I can go ahead and list out many more challenges like casteism, communal rights, unemployment, corruption, but that does not fulfill any purpose, right? To understand how to combat these challenges is the main dilemma here. You have already heard that a democracy means a government of the people, for the people, and by the people. So here, if you notice, the word people, hold the supreme power, and it is us that make or break this democracy.
Not any government, not the president or the prime minister, but us. So it's each one of our responsibility to fulfill this democracy and let it shine. You know how I started my speech by saying Indian democracy is one of the finest democracy in the world. But I wish for a day when I'll be able to say this very sentence with no ifs and buts. Something like this. Indian democracy is one of the finest democracies in the world. Full stop. Thank you guys. That's my time. Very, very proud to oppose. Thank you, Ellen. Now I would request judges to ask some questions. Yes, I have a question for Yashvardhan. Yes, ma'am. You talked about, for the motion by saying that India is doing so much in the sustainable development. Do you think what you said, can you, give few examples for that? Because we are seeing so much of uh, unsustainable kind of development where things are moving at such a fast pace without keeping in mind how we are, deteriorating the environment. Can you please comment on that? See, our country is a very different in various terms. We have people from various cultures, various regions, and who practice different beliefs. So, sustainable development in terms of India, every region has its own requirements. So, according to me, we are a young nation, and we are trying our best to fulfill those needs. We first of all, our nation is trying to fulfill the basic needs of an individual, such as giving houses or basic toilet facilities or basic food to people. But the way that the Britishers left India was just I cannot express my feelings for that. That was such a, I would say, we want at I think we have developed from that a lot, and we are still trying our best to make some developments, but leaders are trying their best to make some developments in various regions, such as in the modernization of the Indian army. We are talking about the space research organization that have made some remarkable achievements. We are also trying. Fine, fine. Thank you, Yashvardhan. Thank you so much. Thank you. Now I have a question for Alan. Alan, you talked about the strength. You started in a very, sarcastic manner about the democracy, and you said that because we are the, largest democracy and because we have fair elections. Do you feel the elections are free and fair? And what I feel that you are not able to connect that how this poverty is affecting the free and fair elections. Can you comment on it now? Yes, ma'am, I totally understand your question. Like I said, I started with on a high note, but that not even negates the fact that our democracy is still the best, though because of its fault, it is still the best. And free and fair elections have been conducted for the time being. Yes, there have been like I said, there have been some inconsistencies over the past. There have been some portions of India where, elections are not considered freely, or like the poor are made use of just when the elections arrive, they make the roads, or like they distribute ration and all just to get those votes. I know, I accept that, but we have to start somewhere. That these are the small inconsistencies in the So is it government the that is problem moving, and that with is with the constitution or with the democracy, the structure itself, or is it because there is improper distribution of resources? That is the problem, not the constitution or the democracy, the model that we follow. not What do at you all, see? ma'am. I don't challenge the model of the democracy, but like I said, it is the people. We are the people who make and break this democracy. So it's just how we behave, how we execute those laid out structure of the constitution. And if we are successful in following the rules laid out, we will be a true democracy one day for sure. Thank you so much. We'll not take much of the time. Thank you. Okay, thank you so much for the Thank question, you. ma'am. Thank you. What an alluring debate. Okay, as we move forward, we would like to invite Somil. No man is enough to govern other man without the other's consent. The person
of democracy in India till today is a testimony to its own success. A very good afternoon to honorable teachers, respected juries, and my seniors, my batchmates, and my dear fellow participants. I, Somil Kumar of first year Botany Honours, would be speaking for the motion. I strongly support the achievement of Indian democracy. By few points, I would like to support my statement. Democracy promotes equality among individuals. It enhances the dignity of individual. It improves the quality of decision making. It allows room to correct mistakes. Since 1989, the citizens were given a chance to elect the representative at the age of 18. This was first feather in the crown of democracy. Here, I would like to take the case of other democratic nation with respect to India. Our neighbor country, Pakistan, got independent just one day before India and become democratic nation. But as a democratic nation, Pakistan has failed and military coup has taken place in Pakistan several times. On the other hand, Indian democracy has not fallen and is still flourishing. Democratic government is accountable, legitimate, and responsible to the public voices. In a democracy, people have the right to choose their representative and the people will have control over them. Citizens have the right to participate in decision making that affect them all. This ensures that working of government is transparent. Everybody expects that the government to be attentive to the needs and expectations of the people. It is expected that democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable. The opposition parties can also question the government policies. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternate. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, but always very responsive or clean. But a democratic government is people owns government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. Now, coming to the most important part of democracy, fundamental rights that protects the liberties and freedom of citizens against any invasion by the state and present dictatorial rule in the country. Right to equality, the absence of legal discrimination on the grounds of caste, religion, sex, and ensure equal rights to all citizens. Right to freedom, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression. Right against exploitation, prohibits human trafficking and beggar to protect the millions of underprivileged and guarantees dignity of individual. Right to freedom of religion, individual has right to profess any religion of their choice. Cultural and educational rights provides the rights to all sections of societies, all languages, and save their culture, script, or language. And under educational right, it is mentioned to provide free and compulsory education to all children in age group of 16 to 14. Democracy in India has strengthened that claims to the disadvantages and discriminated caste for equal status and equal opportunities. India's democratic setup has been vibrant and able to keep the military out of political power. It also shows providence on the part of military general and defense personnel, earning respect from the executive. Being in a democratic country, have more expectations from the. Somil, your time is up, I think. Okay, ma'am. But You have spoken for 2 minutes. Thank you. Thank you, Somil. Now I would like to call Sachin. Good morning, everyone. I am Sachin, student of first year awarding honors. I am again speaking in against the motion. So I have some points. For a democracy, it is essential to maintain communal harmony, integrity, and active participation of people. So, in Indian democracy, we have some problems. First, the misuse of NSA, UAPA, and citizen charges. These laws give the ultimate power to the central government of India and state governments to detain a person without any legal trial. And the conviction rates, even after a legal trial, is more less than 3%, which means that these laws are misused to crush the dissent. And that dissent is the most important part of the country in a democratic country. And the second point, we have an index called Democracy Index, which rank us 53rd in that. And still our ranking is decreasing gradually from 2014 to 2019. And this is not a sign of a good democratic nation. We are a flawed democracy. Some may ask me about the methodology of this index and how this works. It is a long discussion and long topic, so I cannot discuss it here.
And I will also take another part as the misuse of ASPA, Armed Forces Special Powers Act. This act enables our armed forces to take emergency actions without and immune them from legal trial, even if they killed some person on suspicion in disturbed areas, which are like Jammu Kashmir, Nagaland, and some others. This act is also misused to a pretty extent, as we know that there is a recent article on Nagaland that 14 persons are killed under suspicion that they are terrorists or emergency, or but after investigation they found that they are not. And similarly, this means that we have not a good integrity in Nagaland, even in Jammu Kashmir, which is a zoo for a democratic nation to maintain an integrity at least. And I will going to another point is electoral bonds. These bonds are actually making opaqueness in party funding, which is very threatful for any nation, and at least for a democratic nation. There are many challenges for India, but I am talking here only of the challenges which were concerned to democracy. Okay. Thank you, Sachin. Now I would request judges to ask questions. Okay, I have a question for Somil. He, in a Yes, very passing manner, talked about the opposition. yes, Can ma'am. you comment on it a little more? What is Yes, the ma'am. role of opposition in a democracy? Ma'am, in democratic country, opposition can oppose the roles, oppose the power, and like oppose the policies of the central government, the ruling government. Just like if government is doing something, if like opposition is not happy with that, it can oppose that it is not happening according to the democratic democracy. Like that's why, ma'am. That's it, ma'am. Okay, thank you. I have a question for Sachin also. You very well talked about, the various laws, the sedition law, the UAPA and AFSPA. Can you just comment on this, that is it these laws that they are used, the as in the people, whether it's irrespective of the party, which is whichever party is in power, they keep these laws for their own benefit and they're using it in the name of nationalism? Can you comment on this? Yes, How ma'am. do you relate to that? Ma'am, from these laws are many times. If I talk about NSA, it will sometimes removed and sometimes regained and adapted in our system. Sometimes there are many parties, even a National Democratic Alliance and UPA, they both use it for their own means. And this laws gives the power to the personal, to the government, that they can detain a person from 3 months to 9 months without any legal trial. And even if there is an incident on Dr. Kafil Khan, who was a doctor and gets a speech on NRC and CAA, that they are not a good things, are good, and there are something problem with NRC and CAA. He gave the speech, and after that, he are put under these charges and detained for 9 months. After the Allahabad High Court, Fine, and fine. I think you're running out of time now. Thank you so much. Okay. Thank you guys for your great performance. Next, I would like to call Rohit for speaking for the motion. एक विडंबना है मान्यवर कि सुदूर गुजरात के महेसाणा जिले के वडनगर में चाय बेचने वाले दामोदर दास का बेटा, जो खुद बचपन में उनके दुकान पर रह चुका है, वो आज लोकतंत्र के बदौलत देश की कमान संभाले हुए है। और इस वाद विवाद प्रतियोगिता में उसी लोकतंत्र पर मेरे विपक्षी दल एक प्रश्न सूचक चिन्ह बनना चाहते हैं। तो निर्णायक समिति एवं बुद्धिजीवी सदन, मैं विषय के पक्ष में बोलना चाहता हूं और सदन के विपक्ष सदस्य के समक्ष दलील पेश करता हूं कि लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है। अगर कुछ चुनौतियां आई हैं तो ये उस पर खड़ा हुआ है। लोकतंत्र सफल हुआ है, इसका प्रतीक ये है कि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आप मेरे सामने अपना पक्ष रख पा रहे हैं। हम अब सवाल पूछते हैं, हम अब हिसाब मांगते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं। महलों की औलादें अब हमारी तकदीर नहीं लिखती। हम बोल सकते हैं, हमारी उंगलियां उठ सकती हैं, मुट्ठियां तन सकती हैं,
हमारे हाथ नारों के साथ लहरा सकते हैं, हमारा दिल बेखौफ धड़कता है, हमारे होठ खुलते हैं, हमारा सर हिंकार में भी हिल सकता है, हम आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं, हमारी आवाज चित्कार बनती है, चित्कारों से हुंकार बनती है, हुंकारों से सरकार बनती है। हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं, हम सरकार बन सकते हैं, हमारी सरकार हमारी होती है। कोई गोली बंदूक कोई सिपाही नहीं है, सच कहने में कोई मनाही नहीं है, जुर्म का चक्कर और तबाही नहीं है, हम पर तुम पर रियासती रिहाई नहीं है। हम चीन में तियानमेन चौक में टैंकों के तले कुचले नहीं जाते, हम फौजों के जूतों के तले रौंदे नहीं जाते। कोई 30 सेंटीमीटर का बारूद का गोला हमारी आवाजें दबा नहीं सकता, कोई सन की राजा सवाल पूछने पे हमें दीवारों में चुनवा नहीं सकता। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा होता है। हम हुकूमतें बदलते हुए छाती ठोक कर कहते हैं आज सहंसाए तख्त हैं, कल वे नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज्यादती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लोकतंत्र की सफलता मानवर देखनी हो तो नॉर्थ कोरिया और चीन के लोगों की स्थिति और स्वतंत्रता को अमेरिका और भारत के लोगों से मिला लीजिए। बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगल और उछलते हुए जीडीपी और पर कैपिटा इनकम ही आंकड़े सब कुछ नहीं होते, आदमियत भी कोई चीज होती है। हमें तमड़ी हासिल करने की कोशिश में चमड़ी नहीं खोनी है। विकास की गति के मामले में लोकतंत्र कछुआ हो सकता है, लेकिन जीत भी तो कछुए की ही होती है। अगर विपक्ष लोकतंत्र की चुनौतियां गिनाकर उसे विफल बताना चाहते हैं तो सुनिए, वे तर्क सरकारों की विफलता के तर्क हो सकते हैं, कुर्सीधारियों की विफलता के तर्क हो सकते हैं, जमूरों को जिल्ले इलाही बना देने वाली जनता की विफलता के तर्क हो सकते हैं। लोकतंत्र को विफल घोषित करना सभागारों के लिए आसान होगा, पर उसका विकल्प ढूंढना उतना ही कठिन है। सरकार के प्रकारों में यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार है, प्रकार से भी बढ़कर ये एक धर्म है, और धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म नाम से आपत्ति हो तो कह लीजिए ये एक जीवन शैली है। लोकतंत्र हमारा भविष्य है, ये एकमात्र रास्ता है, इस पे अथक चलते जाना है और खामियां खत्म होने तक चलते ही जाना है, क्योंकि समर शेष है, समर शेष है, समर शेष है। लोकतंत्र को सत्य बनाना ही होगा, हमें आपको सबको इसे अपनाना ही होगा, क्योंकि समर शेष है, समर शेष है। धन्यवाद। Thank you, Rohit. Now, I would like to invite Kamlesh debating against the motion. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट विश्व प्रसिद्ध एक ऐसी संस्था जो दुनिया भर के देशों को उनके वहां मौजूद लोकतंत्र के अनुरूप क्रम में बांटती है, और उसके अनुसार भारत जो खुद को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है उसका पद 53वां है। परंतु आश्चर्य की बात यह नहीं है, आश्चर्य की बात तो यह है जिस देश के लोकतंत्र की इतनी खस्ती हालत हो, उस लोकतंत्र के समर्थन में यहाँ भरी सभा में तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं। आज यहाँ बैठे सभी आदरणीय श्रोताओं, मैं आप सबके समक्ष लोकतंत्र के कुछ कटु सत्य प्रस्तुत करूंगा जो आपको संशय करने पर विवश कर देंगे कि जिस लोकतंत्र पर हम इतना गौरवान्वित होते हैं, क्या वह सच में इतना महान है। लोकतंत्र अर्थात जैसे मेरे मित्र ने कहा, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वही लोकतंत्र है जहां जनता के द्वारा चुना कोई जाता है, बन कोई जाता है। ये वही लोकतंत्र है जहां एक रात में देश का प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बदल जाता है। ये वही लोकतंत्र है जहां चुनी हुई सरकारें 13 दिनों में गिरा दी जाती हैं, तो एक रात में बना प्रधानमंत्री अगले 5 वर्ष तक राज करता है। यही लोकतंत्र है जहां पर नेताओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार नहीं अपितु पैसे एवं ताकत के बल पर मंत्री पद दे दिया जाता है। लोकतंत्र की बदौलत आज सिर्फ परिवार ही नहीं, बड़े बड़े अपराधी भी हमारी तकदीरें लिखते हैं। अरे एक बार इस सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में झांक कर देखिए, इस लोकतंत्र का असली रूप दिखेगा। आधे परिवारवाद वाले तो आधे अपराध वाले मिलेंगे। इस देश के लोकतंत्र ने इस देश को दिया ही क्या? गरीबी, भुखमरी, दंगे, लाशें, अपराध, धोखा, बेईमानी, घोटाले। इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य देखिए, जिन नेताओं को देश संभालने वो जेल संभाले बैठे हैं। 90 का चारा घोटाला हो या 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला हो या 12 का कोयला घोटाला, इस देश के लोकतांत्रिक नेताओं ने इस देश को दिया ही क्या? इस लोकतंत्र का जादू देखिए, कोई जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाता है तो कोई चुनाव जीत के जेल चला जाता है। लोकतंत्र अर्थात जनता के बोल पर सरकार बनती है। जनता, मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये वही लोकतंत्र है जहां बिना भ्रष्टाचार कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता, जहां चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को कुछ इस प्रकार नकार दिया जाता है जैसे मेरे मित्र ने इस देश के लोकतंत्र की कमियों का नकार दिया। यह सत्य है। इसी लोकतंत्र के चुने हुए लोकतांत्रिक नेता विधानसभा से लेकर लोकसभा को दंगल का अखाड़ा बना के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे सहपाठी कहते हैं कि लोकतंत्र विफल नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, परंतु उसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस के वर्ल्ड प्रेस एंड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की 90वां स्थान। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, युवा देश भारत, परंतु
ग्लोबल यूथ इंडेक्स में भारत का स्थान 122वां, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, परंतु इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में स्थान 121वां। ऐसे अनेक इंडेक्स हैं साहब जिस विश्व पे ये सबसे बड़ा लोकतंत्र 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाता। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, जब तक इस लोकतंत्र में सुधार नहीं लाया जाता, यह दुखद सत्य सदा रहेगा कि जब आज सत्ता पक्ष कल विपक्ष होगा या आज का विपक्ष कल सत्ता पक्ष होगा, इस देश का हाल नहीं सुधर पाएगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Kamlesh, for that powerful performance. Yeah. I would like request judges to put forward their questions. Yes, I would like to ask one question. रोहित, आपने बोला अपनी भाषण के दौरान सब्र शेष है, सब्र शेष है. This is what you ended with. आपने इससे खत्म किया. समर से Pardon? समर से I'm not able to hear you properly. क्या सब्र शेष है? No. Summer. Okay. Then my question doesn't fall into this category. But okay, still I'll ask. How much time do you think, you talked about the how democracy is important. आपने बात की इस बारे में कि कैसे democracy important है, और आपके जो opponent कमलेश ने बोला कि कैसे वो हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि कितना टाइम और चाहिए कि हमने जो हमारे संविधान में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको हम पूरी तरह से पा पाएंगे, उस पे हम अमल कर पाएंगे? आप व्हाट इज योर विजन? हाउ, क्या लगता है आप कितने सालों में हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे? मैं निर्णायक समिति की प्रश्नों से भली भांति मैं समझ सकता हूं, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि संविधान हमारा जो सर्वोत्तम है, संविधान सर्वोत्तम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंसान उसे अच्छे तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पर लोग भ्रष्टाचार की गलती है, यहाँ पर लोगों के अंदर जो भ्रष्ट व्यवहार है लोगों का, उसका गलती है. इसमें किसी तरह से लोकतंत्र और संविधान को हम लोग नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि जैसा कमलेश ने बोला वो सीधे लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा था, और आप यहाँ पर लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठा सकते हैं. और रही बात कितनी वक्त हमें लगेगी, वो उस व्यक्ति विशेष पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष उस बदलाव को कब तक अपने अंदर ला सकता है, कब तक वो अच्छा बनकर सारे भ्रष्ट कामों को छोड़कर मतलब आगे बढ़ सकता है, वो कितनी अच्छे तरीके से अपने देश को आगे लेके जाना चाहता है. क्योंकि राजतंत्र में भी एक समय राजा अमीर होता है लेकिन बाकी लोग झोपड़ी में ही रहते हैं, तो राजतंत्र भी किसी तरह से लोकतंत्र का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. अग्री विद यू. थैंक यू रोहित. कमलेश, आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना काम ठीक से नहीं करता. सो हाउ डज दैट उससे डेमोक्रेसी का, या जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसमें, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं ये पावर दी है ना इलेक्शन कमीशन को, कि उन्होंने तो उसको बोला है कि अपनी ड्यूटी अच्छे से करने की. सो वेयर इज द गैप? क्या प्रॉब्लम है बेसिकली? कैन यू कमेंट ऑन दैट? यस मैम. Is it that the democracy is not functional or is it something else? मैम रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? मैंने पूछा कि क्या जो डेमोक्रेसी है वो प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कुछ और है? मैम दिक्कत डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र दिक्कत नहीं होता. दिक्कत है कि हम उस लोकतंत्र को किस तरह से लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं. जैसे लोकतंत्र दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे अगर हम बात करें सिंगापुर की, वो हमसे 18 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन आज वो विश्व पटल पर है. अगर हम उस देश को देखें, वो एक ऐसा देश था जहां पे पूरे मछुआरे थे. उस देश के पास अपना कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन वहां की जो सरकार है, वहां का जो लोकतंत्र है, वो इतना प्रभावी है कि उसने उस देश को विश्व पटल पर लेकर आया. वहीं हम भारत की बात करें, हमारे पास बड़े बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो देश का जो लोकतंत्र है वो इतना विफल है कि हम उसको लोगों के बीच में अच्छे से ला ही नहीं पा रहे. अगर हम बात करें राजीव गांधी जी की, उनका एक भाषण था कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं, वो जनता तक 100 पैसे बन के जाता है. तो इन छोटी छोटी खामियों को हमें समझना पड़ेगा कि दिक्कत कहां पर है. हम लोकतंत्र लेकर तो आ सकते हैं, प्रजातंत्र एक अच्छा उपाय है, लोकतंत्र भी एक अच्छा उपाय है, राजतंत्र कभी एक उपाय नहीं बन सकता, पर लोकतंत्र को आप कैसे लोगों के बीच लाओगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है. Thank you. Thanks for presenting your meaningful views in front of us. Now, I would like to call Kunal. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes. हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ. 3 2 1 से आप टाइमर चला देना. 3, भैया 1 मिनट रीसेट कर देना. 3 2 1.
सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। आज सदन पटल पर हमारे सामने विषय रखा गया है भारत की लोकतंत्र की उपलब्धियां और चुनौतियां। तो मैं अपना वक्तव्य इसके पुरजोर पक्ष में रखना चाहता हूं। और आज हमारे सामने जितने भी बैठे हैं वो बुद्धिजीवी और तार्किक लोग हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तब सबसे पहले हमारे पास चुनौती थी कि हम इसको संजो के कैसे रखेंगे, इकट्ठा कैसे रखेंगे। तब हमारे लोकतंत्र जब हमारे पास लोकतंत्र आया और उसने क्या किया, सारे को आज तक 70 साल तक भी, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा भारत एक साथ खड़ा है। ये लोकतंत्र की उपलब्धि है। अगर हमारा देश तानाशाही के रूप पे चला जाता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आज दंगों के बीच में या फिर हमारा सिविल वॉर के बीच में ही अटक के रह जाते। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर हमारे लोकतंत्र की उपलब्धि आई, संविधान दिया। हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। ना तो ये अमेरिका की तरह कठोर संविधान है, ना ये फ्रांस की तरह एकदम लचीला संविधान है। इसने सभी को, आज मैं बोल पा रहा हूं तो मेरे को जो राइट दिए हैं, बोलने का राइट, समानता का अधिकार, और मेरे को शोषण के खिलाफ बोलने का अधिकार मेरा संविधान ही देता है। इसलिए संविधान हमारे लोकतंत्र की उपलब्धि है। फिर मैं बताना चाहूंगा हमारे लोकतंत्र की उपलब्धि में आता है इलेक्शन। क्योंकि जो इलेक्शन, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, वो समय समय पर अलग अलग जगह पे अलग अलग चरण में पूरे देश में करवाया जाता है और वो अच्छे ढंग से करवाया जाता है। इसमें ये हमारे लोकतंत्र की ही वो है। अगर अगर हमारे लोकतंत्र ने क्या बनाया, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों के लिए चुनी गई सरकार बनती है, वो लोकतंत्र है। उस सरकार ने बनाए हमारे लिए, एम्स बनाए, आईआईटी बनाए। अगर यही काम कोई तानाशाह करता, वो जन सेवा के लिए नहीं करता, वो अपना फायदा निकालने के लिए करता। लेकिन लोकतंत्र की वजह से ही जन सेवा को, लोगों को इतने अच्छे इंस्टीट्यूट मिले। आज हमारा देश पूरी दुनिया में ऐसे स्थान पे खड़ा है जहाँ पे कोई बड़ा से बड़ा देश हो या फिर कोई छोटा से छोटा देश हो, वो बिना भारत से मदद लिए या फिर कोई भी बिना भारत से मदद लिए नहीं चल सकता। क्योंकि भारत का पूरी दुनिया में एक वर्चस्व कायम है और भारत की वजह से ही भारत एक मजबूत वो है, मतलब सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत। भारत ने ही आज दुनिया में एक अपना वर्चस्व बनाया हुआ और सभी इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे हम महामारी के तौर पे है, तब भी भारत ने वैक्सीन बनाई। अगर हमारे सामने लोकतंत्र नहीं होता भारत, तो जो काबिल लोग है उसको दबा दिया जाता। लोकतंत्र का काम ही यही है, सभी को समान अधिकार देना। सब समान अधिकार के कारण जो काबिल होगा सिर्फ वही उठ के बाहर आता है और वो उठ के आके अपने देश का नाम करता है, सबका नाम करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 70 साल में आज तक मिलिट्री रूल कभी नहीं आया है। अगर भारत ने बहुत सारी वो देखी है, मतलब परिस्थितियां, बुरी परिस्थितियां, युद्ध का वो देखा है, लेकिन कभी भी भारत इतनी बुरी तरह से डगमगाया नहीं। भारत को सबसे पहले चुनौती, स्टार्टिंग से ही चुनौती मिल रही है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी डगमगाई हुई थी। लेकिन हमारे कुछ अर्थशास्त्री, जो नेता अर्थशास्त्री भी हुए हैं, उन्होंने भारत को वैश्विक मंदियों से भी निकाला है, जिसके कारण ये लोकतंत्र की देन है। क्योंकि काबिल लोगों को वो ऊपर ला रहा है। अगर हम तानाशाही में होते तो सिर्फ जिसके पास रिसोर्स थे वही ऊपर रहते। धन्यवाद। Okay, thank you, Kunal. Now can we have Aditya with us? उपस्थित है टाइमर। सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है जिसके गुण संसार गाता है, लेकिन इसी गणतंत्र में, इसी राज्य में, इसी देश में गरीबों की आवाज हमेशा कुचली दबाई जाती है। मैं आप सबके समक्ष इस सदन की गरिमा को सादर नमन करते हुए अपने वक्तव्य में इस देश के गणतंत्र के पुरजोर विपक्ष में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जिस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना अच्छा गणतंत्र लिखा था, उस देश के गणतंत्र को लोगों ने ऐसे विफल कर दिया है कि समझ में नहीं आता है कि लोग इसे अपनी सत्ता की जागीर कैसे बनाए बैठे हैं। जब मर्जी आती है उसे सत्ता बदल देते हैं, जब मर्जी होती है उसमें नया कानून ला देते हैं। कभी भी प्रियम्बल तक को चेंज किया है देश में। क्या बोलूं मैं इस देश के लिए। इस देश में जब राजनेताओं ने अपने मतलब के लिए देश के लोगों को प्रताड़ित किया है, उनसे अधिकार छीन लिए हैं। मैं बता दूं कि मेरे जो पूर्व वक्ता थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि एम्स बना है या आईआईटी बनी है। कभी आप जाके देखिए एम्स के बाहर लाखों लोगों की लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन उनको पर्चियां नहीं बनती हैं। उनकी दवाइयां जो होती हैं बाहर से लेनी पड़ती हैं पैसे देके। तो ये कहां से हुआ? ये लोकतंत्र की खामियां है कि हमारा लोकतंत्र इतना नाजुक है कि कभी भी कोई भी आके इसे बदल देता है। इसमें कठोरता तो है ही नहीं। जब हम बात करते हैं देश की, हम देखते हैं ये देश महिलाओं का है, ये देश में महिलाएं पूजी जाती हैं। उसी देश में महिलाओं के साथ ऐसे घिनौने कार्य होते हैं।
कि मैं उन्हें बोल भी नहीं सकता हूं। मैं इस सभा में बैठी हर एक महिला से, हर महिला शक्ति से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये देश का लोकतंत्र इससे साथ आपको साथ है? कभी भी मैं देखा है कि जब भी महिलाएं पीछे हो जाती हैं तो ये लोकतंत्र उसे खामी नहीं, उसकी खामियों को दूर नहीं कर पाता है। लोकतंत्र में हमेशा जो सत्ता में जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, बल है, वो हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है। हमने देखा है इसमें पितृ सत्ता चल रही है। इसमें समाज में इस समाज में जिस देश में 20% आबादी दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो, वो देश के लोकतंत्र कैसे सफल मान लूं? मैं उसको कैसे सफल मान लूं? अंत में मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं आती दिख रही है मेरे को कि हमें बाद में कहना पड़े अब पछतावे हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत में आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं, क्या आपका ये लोकतंत्र आपको बलशाली बना रहा है या कमजोर कर रहा है? क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति समान अधिकार से नहीं तोला जाता है। इसमें जिसके पास सत्ता है, पावर है, पैसा है, वही बलवान है। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Aditya. It was quite an enthusiastic performance. Now, can we have judges for interjection? यस कुणाल, आपने इलेक्शंस की बात की, आपने बोला कि समय समय पे पर्व जो है इलेक्शंस को एक त्योहार की तरह, एक पर्व की तरह मनाया जाता है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे जो अभी एक बीच में चला था कि जो इलेक्शंस हैं उनका सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण कर दिया जाए, आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? नहीं मैम, केंद्रीयकरण नहीं, क्योंकि इसका करना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग हर हर जगह की परिस्थिति अलग है। ये ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर केंद्र के अंडर चला जाएगा वो तो फिर सरकार के अंडर ही चला गया, तो वो अपने तरफ से मतलब उसमें गड़बड़ी करेगी। इसको हमें अलग कमीशन होनी चाहिए, मतलब एक अलग अलग ही होना चाहिए इसका सबका, मतलब जिसपे किसी का रूल ना हो, या फिर सिर्फ उसका अलग ही है, मतलब उसको कोई ना उसके काम में रोक टोक सकता है, सिर्फ किसके अलावा, अपनी सुप्रीम कोर्ट के अलावा, क्योंकि वो निरपेक्ष होती है। लेकिन अगर वो सेंट्रलाइज कर दिया तो वो तो सीधा उसमें सत्ता आ गई, पॉलिटिक्स आ गई, तो जो पावर में होगा वो अपना फायदा और दूसरों का अधिकारों का हनन करने की सोचेगा ही। हाँ जी मैम, और क्वेश्चन पूछ सकते हो मैम, इतना ही था इसमें मेरा जवाब। हेलो ओके अर्चना मैम, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आदित्य सिंह से पूछना चाहूंगी। आई थिंक आई एम ऑडिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आदित्य सिंह, आपने कहा कि लोकतंत्र में कई सारी खामियां हैं, कई सारी खामियों की बात करी। क्या आप इस पे रोशनी डालेंगे कि ये खामियां कब तक समाप्त हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? मैं जब तक हम अपने लोकतंत्र को बलवान नहीं बनाते, उसके हर एक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तब तक ही इसमें खामियां बरकरार रहेंगी और चलती रहेंगी। जब तक एक व्यक्ति पूरे देश पे राज करता रहेगा, तब तक इस देश में ऐसी खामियां और बढ़ती रहेंगी। हम देखते हैं कि हमारे देश में पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पूरा का पूरा सारी की सारी चीजें निजीकरण हो रहा है, जिनसे कि समाज में एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों का पूरा प्रभाव होता है। वो जब मर्जी होती है अपनी तरीके से सरकार को, अपने लोकतंत्र को इस्तेमाल करते हैं और अपने अपने फायदे के लिए समाज को बांट देते हैं। हमने कितनी बार देखा है कि समाज में दो लोग सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट दिए जाते हैं। इस देश में तो अब ये परिस्थिति आ गई कि रंग का भी धर्म होने लगा है। तो मैं क्या बताऊं इस पे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने लोकतंत्र को कठोर से कठोर और नहीं बना सकेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। Thank you guys for your strong answers. Now, I would like to call Mantra debating for the motion. Mantra, you are on mute. Hello, am I audible? Hello. Yes, you are audible. Please go ahead. Good morning, distinguished members of the panel and all of the concerned professionals, for teachers and students. Today, I am going to say for the favors on the topic achievements of Indian democracy. The other debaters who are saying against the motion, they pointed out
that the implementation of the democracy. So to counter that, I would like to present some facts that shows the growth of the Indian democracy. As during the first general election in 1951, India had only 54 political parties in elections, but now it has grown up to 464 in the 2014 general elections. It is an evident of deepening of the Indian democratic processes. In the first general election, 19, only 173 million citizens were given right to vote. Of these, and 44.87% exercised their franchise. In the 16th general election in 2014, the size of the electorate had increased to 814 million. The voting percentage had gone up to 66.4, and of these, 67.9% were men and 65.6% were women. The number of constants were increasing. Since 2004, votes are recorded through EVMs, electronic voting machines. These are manufactured in India and their accuracy is assured and secrecy has been fully tested. My other they pointed out on the saying against the motion that they questioned the election commission. I don't think that election commission had done anything wrong. They had fulfilled and made as much possible to conduct fair votes as possible, as they have even went to for a vote of a single man they implemented, and they go there every election to get vote. This shows how Indian democracy is evolving. It is also seen that in the social economic point of view as that India is growing rapidly and rapidly enough to be standing in the front of the at the global level. It is also seen that some of the nations now looking for India for the helps. During this COVID pandemic, we have seen that India had transported almost a large amount of vaccination outside India for the recovery and in free for the very poor countries. It is also shown that India had been developing very fast. Now, as one of the others said on ASPA, I would like it is a controversial process, and for army personnel, it is difficult in their condition to recognize those people who are Time's there up. and who are on. So, Thank thank you, you. Mantra. Thank you, Mantra. Time's up. Now I would now I would like to call Meg Anand saying against the motion. I bid a greeting to every teachers and everyone present here on this Augustish occasion of 73rd Republic Day. Tomorrow, India will enter into its 73rd year of its republic. A common people definitely equates republic with democracy. Democracy. What is a democracy? For a common people, what is your perception of democracy accepted by the people for the people of the people? While I was searching the answer to this question, I remembered a scene from a Bengali movie, Baiste Shravan, released in 2011, where the writer asks his servant, "Do you know what is democracy?" And he replies, "Democracy? Oh, the one in which we voted, right?" And I guess every one of us will agree that for us, our perception of democracy somewhere revolves around it. If we are able to choose our representatives, if we are getting free and fair elections, and if we are getting to change the government, we are in a democratic setup. But that, my friends, is the real challenge to this democracy. And these are not the creation of my mind. If we look at the words of the great philosophers who have given the birth to democracy, be it Montesquieu, Rousseau, John Locke, or anyone, they have never dreamt of a government which we can choose. Because if we can choose, the history has a point that once Rome elected Horse as their senator. So, what is the basic value which comprises democracy, which comprises republic? It is not a free and fair election. It is the inquisitiveness, the self-introspection. Today, I guess the Indian society is lacking this criticism. And by criticism, I never mean criticism of the government, because government will change. I mean criticism of ourselves, our society.
We are fearful for our of our self-introspection. Unfortunately, India has been a land where it was said that Ninnak niyare rakhi angan kutir samay. But in the present day, we are completely hostile to this self-introspection. Why? What are we fearful of? The great German philosopher Friedrich Nietzsche has once said that we don't want to hear truth, for we fear that our lives will be shattered. Why? What kind of? What separates a democracy and a non-democracy is not the free and fair elections. It is the environment where we can think. And once we will think, we will question the state. And once we will question, it will improve the state of the state, improve the state of the society. And if we are not able to think, I'm sorry, my friends, we are not fit for this democracy. Be it Plato, Aristotle, Socrates, or Chanakya, they were known for their harsh, blatant, and open criticism of this government, of the state, and therefore they are known to be the greatest philosophers. With these words, I would like to conclude myself. Yes. Thank you, Meg. Now I would request judges for the interrogation. Mantra, you talked about, while talking for the motion, you talked about that now we are having, elections through the EVMs. But still, there are many developed nations where the secret ballot is performed. What do you think is the reason? Ma'am, I think the thing is that the technology India developed in India, EVMs, are not developed in those countries, and though they have to buy it from India to use it, and they have their trials which they developed. It wasn't that efficient, and moreover, they had sometimes technical issues which made them that not to use them in the elections. So, and in India, it was functioning very well throughout when it was given the go ahead in India. Okay. So I was actually asking about some of the most developed nations. Anyways, thank you so much. Thank you, Selena. I think you can go ahead. Ashna ma'am, do you have any question to ask, please? Meghanand, in your presentation, you mentioned about that the perception of republic is or democracy is the elections. Is that so? Is No, that ma'am. the only No, perception ma'am. people have? No, ma'am. I was telling that people's perception somewhere revolves around this. That if we are able to change the government, if we are able to choose our representatives, then it is almost a democratic government. And change the government. Can we change it before 5 years? Ma'am, that actually depends upon how we have voted earlier. If we have not shown, Thank you for your answers. Selena, you can go ahead, please. Thank you. Yes. Lekha Didi, please continue. Yeah. Next, I would like to call Manvi to put her point of view before us. As Abraham Lincoln once said, democracy is a government of the people, by the people, and for the people. Good afternoon to everybody present over here. Today, I, Manvi Kataria from Botany Honours third year, is present on this platform to share my views on the topic, achievement and challenges of democracy. I would be speaking in favor of the motion. As we all know that what democracy means. It means that it is a form of government where people have the power to elect their representatives and elect them as their leaders and can make decisions for the country. Now, after independence, we have also achieved a lot of things. In the political front, if we talk about, the number of political parties has rose in our democracy. In 1951, the number of political parties was 54, but now in 2011, in the past few years, basically in 2011, the number of the political parties is 464, which means that there has been difference of opinions and new developmental ideas in our democracy. Since 2004, there has been the elections are being recorded in through EVM, that is electronic voting machine. These are manufactured only in India, and they have and their accuracy and secrecy is fully tested. Since
1989, the representatives of India have the power to elect their representatives from the age of 18. This is also another feather of democracy. Also, under the 73rd and 74th Amendment Act, certain seats are reserved for socially backward classes. Some of the seats are reserved for women in gram panchayats and municipalities. Now, if we talk about the medical front, the life expectancy has been rose from 36 years in 1951 to 66 years in 2011. This clearly tells us this is because of the new developmental ideas and the new healthcare schemes being launched by the government. Now, if we talk about the economic front, these basically include strategic alliances and security, economy, policies which are being made by the government. India is a superpower in South Asia and a regional power in North Asia. Now, we can't even imagine the world where people don't talk about India. India is recognized worldwide. Now, if we talk about the defense system, India ranks at position 4. We have one of the best defense system in the world. And our relationship has been strengthened over the years after independence with countries like US, UK, France, etc. So these were some of the important achievements of our Indian democracy. The list is endless, but here were some of the major chunks. Now now in the Indian democracy, we also have our constitution, which includes some fundamental rights and fundamental duties, directive principles of state policies. Also, we have an integrated and independent judiciary system, which is fearless and is independent. It is not a slave of the government. It can take decisions and pass on its judgments to everyone, to the criminals or whatever, or the person who are involved in certain crimes. Now I would like to conclude by saying that it's just conclusion. I would like to conclude by saying that democracy is a form of government where people can elect their representatives, and is the best form of government any country can experience, wherein people have the freedom to make their government and they can criticize their government whenever they want. And I would like to sum up by saying some of the words by Dr. B.R. Ambedkar. Political democracy is not achieved unless there is social democracy. It means it gives a way of life through liberty, equality, and fraternity. Thank you for patiently listening to me. Thank you, Manvi. Now I would like to invite Sajjad. So, good afternoon, everyone. So, today I'm going to speak about some of the challenges that the Indian democracy is facing. So, democracy is basically having its root word in a Greek, that is demos, which means that supreme power is vested by the people. But I have to say this, that Indian democracy has completely, has forgotten its root word itself, because the supreme power in India is basically being, basically being held by the government. So, Abraham Lincoln once said that democracy is of the people, for the people, and by the people. But in India, this definition is completely, changed. What this definition is currently is that democracy is of the government, for the government, by the people. And now here I want to point this out, that we can elect our leaders, we can elect our representatives, but we cannot elect the people who are running the necessary things that we require in our day-to-day life. For example, we can choose our leader, but we cannot choose our education minister. And I cannot choose the man who is gonna decide that what my future would be like. Like, what if my education minister do not even know the spelling of education? What if my defense minister do not even know the difference between a howitzer and a gun? And that right is completely avoided from us, abstained from the people of India. Now, they say that in the democracy we have right to speak, but if you speak against the government, then you might be anti-national man. They say we have right to information, we have right to seek the information. But if you try to seek the information, the very next day you might be called upon by the ED, Enforcement Directorate, on your door. And democracy is basically having 4 pillars, that is media, judiciary, legislature, and executive. But the 2 pillars of the democracy in India, that is media and judiciary, are completely broken. Media is completely biased, and judiciary,
One judge in India is having a caseload of 50,000 people. So justice is really, really difficult. It is really, really difficult to get justice in India. It is nearly impossible. And one more thing that I want to add in this statement is that the CGI of India, that is the recent CGI of India, that is Mr. Bobde, was selected as the member of parliament. So, this completely demonstrates how autonomous our judiciary system is and how well we are running this system. And now I want to tell you all is that we do not have the power. We have the power to, elect the government, but we do not have to power to select the people that are going to represent us. So that is how I want to end my speech. Thank you, sir. I would request judges to ask questions. I have a question for Manvi. First of all, I was very happy to see at least one girl speaking in the entire competition. There was no girl representative. Anyways, Manvi, I have a question for you. You talked about, that during the years we have improved our relations with UK and US. My question is it important to have friendly relations with the neighboring countries or to have more friendly relation with those which indirectly try to control other nations or which have earlier colonized us as well? Ma'am, I believe that our neighboring countries are have constantly betrayed us in the past. Like if we see the Indo-China war and the Indo-Pakistan war, they have constantly betrayed us. So, ma'am, I think that it is better to have friendly relationship with some of the superpowers who can actually help us in future. Okay, fine. Thank you. I'm done. I mean, I don't have any other question to ask, Lekha and Selena. Thank you. Over to you. Thank you guys for your incredible performance. Now, I would like to call Vibha debating for the motion. Am I audible? Yeah, you are audible, but I think she is not in there. She's in there. Then should we move on? Okay. Fine. So now I would request Priya saying against the motion. Am I audible? Yes, you are. सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर रखा गया विषय भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां एवं चुनौतियां। मैं भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। हम गणतंत्र के 73वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तथा इस उपलक्ष्य पर भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों पर प्रकाश डालना एक अत्यंत आवश्यक चीज है, अत्यंत आवश्यक विषय है। भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी अड़चन भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, किसी ने सही कहा है कि घूस लेने के आरोप में अंदर गए थे और घूस लेने के देकर ही वापस बाहर आ गए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था, सरकार जनता के हित में 1 रुपए जारी करती है जो आगे जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही रह जाते हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत चुनौती भरा विषय है। इसका निर्मूलन करना अत्यंत आवश्यक है। महोदय, कहा गया कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए होता है, परंतु क्या आप इससे सहमत हैं कि वंशवाद भारतीय लोकतंत्र में अब अपने पैर नहीं पसार रहा है? देखिए, संविधान में नियम कानून तो अनेक हैं, परंतु संविधान के नियमों का पालन एवं नियंत्रण क्या ये अच्छे से हो रहा है? ये कोई देख रहा है? नहीं। हमने स्त्री सशक्तिकरण की बात की, लेकिन स्त्रियां आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। हमने बहुत से वक्ताओं ने, बहुत से लोगों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, परंतु क्या ये निजीकरण के दौर में ये सभी लोगों के लिए पहुंच पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महोदय, ये इस भारतीय लोकतंत्र में क्या
मॉब लिंचिंग, महिला शोषण, ये सब एक चुनौती नहीं है, अवश्य है, ये चुनौती ही है। भारतीय लोकतंत्र एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी अनेकानेक हैं। महोदय, बेरोजगारी और गरीबी, क्या ये एक चुनौती नहीं है? आज रोजगार के बिना हमारे युवा 2 वक्त की रोटी भी नहीं अपने लिए नसीब कर पा रहे हैं। क्या ये एक चुनौती नहीं है? गरीबी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तथा भारतीय लोकतंत्र, जैसे कि हम कहा गया कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के हित में होता है, परंतु क्या जनप्रतिनिधि का अपराधीकरण नहीं हो रहा? लोकतंत्र के मंदिर में अपराधी जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनप्रतिनिधियों द्वारा भ्रम का मायाजाल फैलाया जा रहा है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Priya. Now I would request judges for interrogation. प्रिया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपने कई चुनौतियों की बात करी। क्या आप सोचती हैं कि हम कभी इन चुनौतियों से उभर पाएंगे या नहीं? जी, हम इन चुनौतियों से उभर पाएंगे यदि लोकतंत्र में ये व्यवस्था आ जाए कि हम नियम कानूनों का अच्छे से पालन नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब लोकतंत्र ही ऐसे नियम निकाले जिससे कि जो हमारे नियम कानून है, ये अच्छे से इनका पालन अच्छे से हो, तो जो भी संविधान में नियम कानून है और इनकी व्यवस्थाएं हैं, उनको अगर अच्छे से हमने पालन किया, तो ये इन सब चुनौतियों से हम उभर सकते हैं। जैसे कि स्त्री सशक्तिकरण, यदि हम देखते हैं महिलाओं का शोषण होता है, इसमें संविधान में नियम कानून अनेक हैं, परंतु क्या इनका पालन अच्छे से हो पा रहा है? नहीं। भ्रष्टाचार भी इसमें एक बाधा बन सकती है कि हम घूस लेने में विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतांत्रिक संस्थान है, ये इसमें ये भी एक चुनौती है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। Thank you all the participants for an amazing deliberation. And with that, I would like to conclude debate competition, and the results for the same will be announced later in this meeting. Okay, so what's next? The rhythm of Gujarat makes your heart to dance on the beat. Garba is the conversation.